Assalamu alaikum sir, my name is Abdul Wahab. My project name is guess the movie Bollywood movie name. My team members are Rian, Siddique, Abbass, and in this project, user will create an account. Then the game station will given to the user, and user will play the game. These all the functions are divided in some functions. Now, first of all, the user account setup. This is created by the Abbass and Rian Siddique. The game section and game is made by me. Now Abbass will tell you how he made the user account setup function. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अब्बास है। मैं हूँ BSCS 1B में हूँ। या आज मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताने आ रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट मेंबर है वहाब और रियान और मैं। ये प्रोजेक्ट जो है अभी हम तीनों ने मिल के बताया है। मैं आपको अपना हिस्सा बता रहा हूँ सर, जो मैंने जो लिखा है। मेरा इसमें काम था सर, मैंने यूज़र अकाउंट सेटअप के बारे में बताना है आपको। यूज़र अकाउंट सेटअप के बारे में बताना है तो सर मैं स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल ले लिया। मैंने स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल बना लिया जिसका नेम है यूज़र आईडी और पासवर्ड, और मैंने एक कंफर्म पासवर्ड के लिए बनाया है। ये सब जो स्टोर हैं सर, ये वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं। और हम यूज़र नेम को बोलेंगे कि अपना यूज़र नेम ले। जब वो यूज़र नेम ले लेगा अपना, फिर सर हमने एक वर्ड में एक बनाया है आर पी जी स्टैंड फॉर रैंडम पासवर्ड जनरेटर। हमें जो स्ट्रिंग बनानी है वो सी लैंग्वेज वाली एक स्ट्रिंग बनानी है, जिसमें हमें एक वेरिएबल बनानी है जिसका साइज़ लिखना है। हमें साइज़ हम लिखेंगे। हम सर साइज़ लिखने के बाद हम ये STRLEN का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ऊपर करेंगे। ये जो हमने ये देखें सर, ये हमने हेडर फाइल में लिखा हुआ है। इसके बारे में इसमें हेडर फाइल के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद एक रैंडम पासवर्ड हमें चाहिए होगा जिसका साइज़ होना चाहिए 12 होगा। रैंडम पासवर्ड का साइज़ 12 होगा और 12 होगा। हम फिर एक फंक्शन लेंगे सर। यहाँ पर जो मैं एक फंक्शन लूँगा सर, यहाँ पर जो होगा SRAND होगा लिखने। उसका भी हमने हेडर फाइल पे सर ये लिखा हुआ है, सी टाइम के उससे लिखा हुआ है। हमने वो लिखा हुआ है सी टाइम के उससे। तो हम इस पे फिर सर इसमें एक आ जाता है नल भी हमने लिखा हुआ है। ये नल का मतलब है सर, ये हर एग्जीक्यूट के बाद ये नंबर चेंज होता रहेगा। अब हमने सर इधर हमने एक उस यूज़र को बताना है कि यहाँ पर सी आउट करे योर रैंडम जनरेटेड पासवर्ड। वो फिर इंटर करेगा। फिर सर हमने एक फॉर लूप लगाया है। मैंने फॉर लूप लगाया है जिसमें मैंने ये आई से डिक्लेयर किया, जो मैंने ऊपर लिया हुआ है। आई 0 होगा, फिर आई जो होगा सर ये होगा लेस देन 12 होगा। फिर आई में एक ऐड होता जाएगा। फिर सर सी आउट होगा, जो फिर हम RAND मॉड के साइज से करेंगे। और फिर सर हम इसको सी आउट करेंगे, स्पेस देंगे और एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद सर फिर उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड सी आउट इंटर पासवर्ड आएगा। दोबारा उसका एक पासवर्ड आएगा सर, फिर सर हम एक और उसको एक कंडीशन देंगे, पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड तो सी आउट अकाउंट सेटअप। सॉरी सर, हम फिर एक और कंडीशन देंगे, इफ़ अ पासवर्ड इज़ इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड सी आउट होगा वहाँ सर अकाउंट इज़ सेटअप सक्सेसफुली, एल्स सर पासवर्ड डजंट मैच ट्राई इट अगेन। हमने ये बताना है। फिर सर हमने एक ऊपर हमने एक और चीज़ लिखी थी, बूल नाम से एक हमने स्टोर किया था। इधर सर हमारे पास वो लिखा होगा, बूल नाम से हमने इधर लिया हुआ है पहले का सर। इसके बारे में सर हमने फिर बताना है, अगर हमारी बूल का हमने बताना है कि ये ट्रू है
तो ये हमने सी आउट इधर लिखना है, इंटर योर यूज़र नेम, वो हमने यूज़र नेम हम उसको बताएंगे, फिर वो इंटर योर पासवर्ड हम दोबारा लिखेंगे, फिर पासवर्ड के बारे में सर वो इंटर करेगा, फिर सी आउट होगा इंटर योर पासवर्ड अगेन टू कंफर्म, वो फिर कंफर्म करने के लिए वो होगा। फिर सर हमारी यहाँ एक कंडीशन लगेगी, पासवर्ड इक्वल्स टू, अगर पासवर्ड इक्वल है कंफर्म पासवर्ड के, अकाउंट इज सेटअप सक्सेसफुली, एल्स एल्स पासवर्ड डजंट मैच ट्राई अगेन का हमें ऑप्शन आएगा। फिर सर एक कंडीशन है, इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ सर हम एक वाइल लगाएंगे जिसमें ट्रू के बारे में बताएंगे, इफ़ पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, यहाँ ब्रेक हो जाएगा सर, और फिर पासवर्ड ट्राई अगेन का ऑप्शन आएगा, और फिर सर यहाँ सी आउट एंड एल हो जाएगा। तो सर मेरा इधर प्रोजेक्ट में काम इतना ही है, बाकी ये यहाँ तक मेरा और रियान का हिस्सा है, बाकी हम तीनों ने सर मिल के प्रोजेक्ट बनाया है। Now Rian Siddique will describe his contribution on the user account setup procedure. वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद रियान सदीक। सर प्रोजेक्ट के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सर ये मैंने यूज़र अकाउंट सर सेटअप बनाया है। सर इसमें हमने सर ये यूज़र अकाउंट सेटअप है। सर इसमें सबसे पहले सी आउट एंटर योर यूज़र नेम, सर यूज़र अपना नाम पहले देगा, गेट लाइन सीन डॉट यूज़र आई डी, सर ये स्पेस के लिए हमने यूज़ किया है। सर उसके बाद RPG रैंडम पासवर्ड जनरेटर नाम का सर हमने फंक्शन यूज़ किया। सर हम पहले रैंडम पासवर्ड जनरेटर नाम के फंक्शन पे आ जाते हैं। सर वी आउट रैंडम पासवर्ड जनरेटर नाम का एक फंक्शन यूज़ किया गया। हमने सर 4A नाम की एक स्ट्रिंग, सी में एक स्ट्रिंग यूज़ की है, 4A 100 के साथ। सर इसमें हमने डिफरेंट अल्फ़ाबेट करैक्टर और स्पेशल लेटर्स लिख ली हैं। सर इंट साइज़ नाम का एक हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया सर, जिसमें strlen नाम का सर में फंक्शन यूज़ किया, जिसकी हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट h सर हमने यूज़ की है। सर अब आगे इसके अंदर सर हम ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स ये सारे स्टोर कर देंगे। फिर आई नाम का एक इंटीजर वेरिएबल सर हमने लिया है। फिर लेंथ इज़ इक्वल टू 12, हमने लेंथ जो इसकी रखी है वो 12 रखी है। सर इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। फिर srand की टाइम नल का सर हमने एक ये फंक्शन यूज़ किया। सर ये फंक्शन इसलिए यूज़ किया कि हर सेकंड के बाद हमें एग्जीक्यूशन, हर रन टाइम के बाद जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमें डिफरेंट पासवर्ड को जनरेट करके दी। इसके लिए हमने सी टाइप हैशटैग इंक्लूड सी टाइप के एक ये लाइब्रेरी फाइल भी दी है। सर सी आउट योर रैंडम पासवर्ड जनरेटर, अब हमने सी पासवर्ड जनरेटर को किस तरह यूज़ करना है। सर लूप फॉर लूप यूज़ किया, आई इज इक्वल टू 0, आई इंटीजर हमने पहले ऊपर शो डिक्लेयर कर दिया था, आई लेस देन लेंथ से कम होगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर सी आउट रैंड मॉडुलस डिवाइडेड बाय साइज। सर रैंड मॉडुलस होगा, उसको डिवाइड करेंगे साइज से, मतलब जितना भी सर ये साइज़ होगा इसको डिफरेंटली तरह जिस तरह भी आगे पीछे करके डिफरेंटली तरह अल्फ़ाबेट्स को करैक्टर्स को जिस तरह भी लिखें तो ये पासवर्ड जनरेट कर दे। सी आउट एंडल ये स्पेस के लिए यूज़ होता है। अब दोबारा यूज़र अकाउंट सेटअप पे आ जाते हैं। सी आउट किया, फिर एंटर योर यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा, फिर गेट लाइन साइन पासवर्ड स्पेस के लिए इस्तेमाल, फिर एंटर योर पासवर्ड ट्राई अगेन टू कंफर्म, दोबारा पासवर्ड पुट करेगा कंफर्म करने के लिए, फिर गेट लाइन का पासवर्ड यूज़ करेंगे वही स्पेस के लिए, फिर पासवर्ड। अब कंडीशन आगे, जो पासवर्ड हम देंगे वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल होगा तो अकाउंट सक्सेसफुली रन कर लेगा। एल्स अगर पासवर्ड डज नॉट मैच नहीं करेगा तो इफ़ पासवर्ड डज नॉट इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड के नहीं होगा तो ये फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी। जिस तरह ये हमने बोल पासवर्ड की कंडीशन दी थी, अगर ठीक होगा तो ट्रू होगा, अगर पासवर्ड गलत होगा तो फॉल्स होगा। वाइल लूप की एक हमने कंडीशन लिख ली है ट्रू, इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल होगा। जब तक इक्वल नहीं आएगा ये वाइल लूप चलती रहेगी, अगर ये इक्वल आ जाएगा तो ब्रेक होगी। पासवर्ड ट्राई अगेन का फंक्शन यूज़ किया, ये पासवर्ड ट्राई अगेन के फंक्शन। इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, जब पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं होगा सी आउट करेंगे, एंटर पासवर्ड एंटर किया जाएगा, फिर गेट लाइन सीन पासवर्ड, फिर स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, फिर सी आउट दोबारा
पासवर्ड लिखेगा कंफर्म करने की, गेट लाइन सीन कंफर्म पासवर्ड, इफ पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पास, अगर पासवर्ड कंफर्म होगा तो अकाउंट सक्सेसफुली रन करेगा। अगर एल्स अब पासवर्ड डज नॉट मैच नहीं करेगा तो ये अकाउंट सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। और ये पासवर्ड ट्राई अगेन सी आउट एंड एल जी वी स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। सर इस प्रोग्राम में बेसिकली ये यूज़र अकाउंट सेटअप मैंने और अली ने मिलके बनाया है सर, जिसमें लेकिन जो मेरा काम है सर वो इसमें आरपीजी का फंक्शन, आरपीजी का सर ये जो फंक्शन है और उसके बाद ये पासवर्ड ट्राई अगेन का फंक्शन है सर, ये मैंने किया है। will describe the whole project on the behalf of my team. Now I will describing the whole the project from my team. First of all, we will use the header files IO stream for the standard input output stream, and we will use the string functions, so string.h and string, and this for the buffer cc standard library we will use for the flash system for the buffer system to reduce the buffer system problem, and c time for the random execution names of the movie names, and to for the random password generator function we use every time randomly we need it is the password random, so we using C time library header file and using namespace std. First of all, we will declare the global variables which will use in our functions. First variable is user id, a string which is string, and this password confirm password, check user id and check user password. Now this variable char s150 is will use to store the movie names, and this will use to copy the check compare the both the movie names. We will say s1 equal to s2 for comparing. We will describe in the function now, and this will store the characters which we use in our game, and this will use to store all the movie names, and this will take user a character in the filling the blanks of the movie in the game, and this will ask you this is a choice which the user will ask you, do you want to play again? If we press the y, then the user will play the game, otherwise no. These variables are used in the loops in ij and ij and pz and ab are used in the conditions. First of all, we will create a user account setup which we will use this rpg function which is known as random password generator. If the password fails, we will create a function which is known as password try again function. Now come to the function user account setup. First of all, we will say enter your username. This is for checking the your password is true or not. Bool ps is true. We will ask the user to enter the user get line is used because get line c in user id is used because this is a string in c++. That's why we are using like that. But otherwise, we would declare in array string we will use c in dot get line. Once the user has entered the username, the random password generator function will be called. Now come to the random password generator function. This random password generator function will store the random alphanumeric alphanumeric types in which I have taken alphabetically large alphabetical characters and small alphabetical characters and digits and some special characters. I create a variable in size and use the C string header file. We use the function strlen a, which is a variable name of the our string, which strlen is used to store the size of a string. We will copy the whole the size of the string in numbers with the variable size. Int I is for use for the loop, and length is declared for us to generate the password length. Srand, this function is used to generate the random. It can be in random now. It can use to generate random numbers, characters, and alphabets. Everything. And time for every execution, I need to change the random password. That's why I use a header file c time here, and the time null. Time is null. Every execution the random generator password will change. That's why I use the time null. See out
your random generated password is, then we will write how the random function will work. For of course the password will start from the zero, from the password will length I is equal to 0 for the loop I less than length. How much length we will need of the password will describe here, and I plus n. See out a rand or modulus of the size how we want to change this character size by size, how they will randomly execute it. Every execution they will change their size, they will change the number, random number will generated will be divided with size, and every time random characters are printed. And see, this is for the spacing, the cout handle we have used. Now come back to the our function user account setup. Now we will ask the user to enter the password, because we and the password is a global variable which we have taken, and we also take that if the user wants to give the space, he can give the space. That's why get line is used here. And again ask the user to come enter the password again to confirm the password. We will set if the password is equal to confirm password, then print out the statement the account is set up successfully, otherwise say password does not match and try again. If password does not match, we have created a bool variable. We will say password is ps, which is stand for password is equal to false. While condition will true, we take a while loop and we say if the password is equal to confirm password, then break, otherwise call the password try again function, which was created above the user account setup function. Now we will say if the password is not equal to confirm password, the enter then taken a password, and backslash n is a escape sequence used to to break a line or take a new line, or get line seen password of course, and ask the confirm password. We say if the password is equal to confirm password, then say the account is set as successful, otherwise say password does not match, try again. And the loop will execute until loop will execute until the password match the confirm password. Now come to the now user will now game instruction will given to the user. First the game instruction will that it will given to the user. You should have to activate the caps lock button, otherwise the game will not work properly. In the following film names, we will give this a filling the blanks project, which have user has to guess the Bollywood film name, and the user will give the English vowel letters in the Bollywood film game name. And every user has to given the five chances, and every wrong input user will press a character and every wrong input user will lose one chance. And system pause to remember will is the bad habit to use, but to display in the terminal to the user instruction when the user press any key, then it will work, then it will go to the next function. Then we will call the create a game function, which will come after the instructions of the game. Now every time I need a different Bollywood movie name in the filling the blanks, so I using the sram and time function for that. And while true, oh, the loop will execute, the game will execute until when I will like to and tell you in at the end what condition I will use to terminate the loop. So first of all, we have created the variable L as a global variable, and for the this variable is this loop is used to random to set up the random of the Bollywood movie name function. For the b is equal to rand, and the modulus of 10 is a and b are set up for the conditions if the and they are used to check to call use for the movie names for the random for the generation of the random movie names. We will call the b is equal to rand modulus of 10, and the random number will divide it by 10, and with that if the b is equal to 0 0, then a is equal to random modulus 10, and that is the condition. Every time we will get a will get an any value which will be which will get I will get any value which will has a movie name, and this will whole work with 9 digits, and of course and now we will come if the value of a is equal to 0, then copy this movie name in the which is created in char as 4 we have declared in above section, and the global variable also,
and which HRS4 which copy this we will declare variable which S4 which has a movie name, we will copy this into S1. We will say a is equal to 1 and we will say copy the movie name in the s1 variable which is declared in above, and we will make this we will how much names of the games will be movies name we need, we will will follow that. I have taken the 57 Bollywood movie names, so let's skip this now. Now come to the function where with the game instruction will now where the game starts. Now the game will start. Now user will given the five chances that we have used a variable. We say p is equal to 5 and p is less than 0. We will decide when the chance will decrease. So we will tell them. First of all, we have to set the user. We will use a C language statement, printf, and you have and percent and format specify percent d for the integer to print in the value of p which is 5, and user have left the chances for the guessing the name of the film, and user will have the 5 chances for left the name. If we will take we will declare a variable, we have declared the above, we will say I is equal to 0, and we will say that the low while s well while the s1 the uses the movie names does not equal to the null character. We will say in the s1 string the which is used storing the movie, the user has to given the E vowel characters, English vowel characters, then A, E, I, O, U, and S1 is equal to S2 for comparing the both movie names that will we use letter. I will show you in the code. And S1 is also equal to backslash, which is also used to print the backslash on the movie name. Some movie names are the bigger, that's why we have used the backslash in our strings. I will say the move S2 variable string is equal to s1 string, and then you have to print the s2 string and which will print the a e i o u and backslash in the vowel letters in the movie name. Otherwise print the spaces if they found a e i o u were English vowel letters and the backslash in the movie name, they will print they will print the movie it will print these characters, and the percentage C is the character format specifier which is storing the character by in this string. And otherwise we will say print the backslash hash where we declare the s1 with an this backslash letter, and we will I plus plus for the every execution they do that. For s over 2 I is equal to null character, we will say printf enter an any alphabet, and scanf we will use a percentage s a percentage s for the format specified for the string. We will take an character and store character, and ampersand symbol is used to store a character by character. We will take a q variable which have we declare in the globally. We will say s over 3, the string 3 will have the loop have the array of q is equal to c, and we will store the character store the characters in a string. This one is used to store the user enter characters in a the which will show which character has been used by the user, and is equal to backslash null character of course. That is equal to 0 which will use which shows the false here, and j is equal to 0 is used in a loop. We will say s1 over j is not equal to negative. If s over j is equal to c, then we will say s over j s over 2 over j is equal to s over 1 over j, and z plus plus the character. If z is equal to 1, we will say if the condition is true, the user enter character is matching in the s1 string with s2 string, then the user has then p plus plus and the chance will increase, and you say correct you have entered the correct. Otherwise say otherwise don't print anything and j plus plus, and then say and say if the z is equal to 0, then say if the user enter character is strong,
which is does not the match the Bollywood movie, the film name, film name, character, then say wrong input, and user will lose one chance, then P minus minus, and print these statements into set and backslash t again. This is used for the tab spaces and VV spaces the stars and VV space the Bollywood and VV space. And this backslash b is also used for these audio beep sounds, but this is not work here. And this see out game star, you have used these character. We will display in S3 which character has been used by the user, and to check the result, to given the result, we will compare the toasting. We will be using the function strcpm s1 and s2. We will say if s2 is the string s1 and s2 match is equal to 0, which means the both strings have the same names the user has entered, and then say the your enter film is correct, and print the s1 and print the movie name and say you won and thanks for playing the game. And the game is made by Abdul Wahab and Alibaz, and game is made by. And then we will say break this and queue cluster. We will if the we say user chance becomes 0, then print you lose, and the name of we will print the name of print, and the put as will print the movie name. We say thank you for playing the game and thanks, the game is made by me. And we will ask the user because the loop is running in continuous manner, which we will start while true. We will say do you want to play this game. We will ask the user to because they want to play or game. F flush standard input is work same like C in dot ignore, which you have which will solve the buffer problem. We take a choice. We will take a choice from the user. We will take a character. We will say a character, and we will use to store this character in the ampersand ch. We take a character. And we will say if the character is equal to y, then ask the user about the user ID and ask the user about their password, and we will ask the user password. And if the user ID is equal to, if user id is equal to check user id, if password is equal to check user, means if the user id and password match, then game will continue. Otherwise say you have entered invalid credentials and access denied, and game will discontinue. Otherwise if the user press no, then we will say we will break we will cut out we will close the game. And now we will and now in main function, first of all we will call the user account setup, in which the random password generator function is called. And we will after the user have set up the account, then system will pause function is used, which will pause the program and ask the user to press any key. When the user press any key, it will system cls, which will known as a clr screen, which is using c, which is used to clear the screen. This function will clear whole the input of the which the user has entered, and the enter. And then the game instruction will given to the user, and system pause is used in game instruction feature. When user will enter press any key, then game will start, and this whole the procedure will start. Now let me show you show you to run the program is working fine or not. Now first of all we have run the project. So first of all, the and we have to enter the user ID. So I have written the SHK Wahab, and we have given a random generated password which length is 12. Now we have set up the password, which is my name is right now. And of course, if I will show you if the wrong password is entered, what will it happen? And if I have read wrong password, then if we say password does not match, enter the password. And now I will set the password correct password, and now enter. And now it's showing me account is set up successfully. Press any key to continue. I will press the enter key, and now the game instruction is showing to me, and I have to use the caps lock button. I have to activate the caps lock button to play the game. Now I will enter the letters. Now I have the 5 chances for guessing the name. The name is given to me, and let me check the chat. Yes, this is correct. Correct.
character. That's why he's giving that you have to enter the correct enter. And let's say this wrong character. That is also correct letter. Character. That's why it also printed on it. That is wrong character. That's I lose the one chance and it's showing me you have lose four chances. And now I've entered the correct answer and it's showing me representing the characters which I am using here. Here, sir. And now enter the movie name. Um, and now it say, yeah, thanks for play. You won. मैंने say I have guessed the correct name of the one. Now I will say yes. I want to play again. Now I will enter the user ID again SHK Wahab and SHK Wahab and the password which I. Now the game is started. Now enter the any wrong input here to check. Let's make check if I enter the wrong that if we show that I lose or not. Let's enter let's say. Now the movie and then say I use this character and I lose because I have not guessed the movie name correctly, which is bell bottom, and I am not the last character. Then I will say again, yes, I want to play again the game. Then I will enter the wrong user ID to show you that if I will enter the wrong user ID and pass anything from the list, then the program will automatically disable with 10 minutes. Now say invalid credentials access denied and the project and the project has been and then sorry the now the game is closed. Our project is working fine, sir. Thank you, sir. If you give us the good, if give us the full marks, I hope I will able to explain you all the project correctly. Now we close this. Thank you, sir. Goodbye.